Hello everyone, a warm welcome to all of you on EduTap and welcome to the top 50 MCQs in which we are going to cover the top 50 MCQs from the month of January 2023. Okay, so guys, first of all, before beginning this session, there is a very small request to all of you that all of you are requested to give a thumbs up in the comment section if I'm audible and visible to all of you so that we can begin this particular session. So guys, I'm waiting for your responses. So I'm getting some responses from the people here. So guys, a warm welcome to all of you in the today's top 50 MCQs on EduTap, in which we are going to cover the top 50 MCQs from the month of January 2023, and this is the part 4 of this particular series, जिसके अंदर हम cover करेंगे top 50 MCQs which are general awareness MCQs which are relevant for RBI Grade B, NABARD Grade A and the SEBI Grade A exam. So guys, before starting the session, I would like to tell you that this is basically a revision session. जो भी हमने last week अपने fast track sessions में cover किया है उसको हम revise करेंगे in the form of multiple choice questions, and which is also the best way in order to revise whatever we have covered in the past 1 week. Okay, and in the exam as well, you are really required to solve such kind of MCQs, and that is why this is the best way of practicing the information that you have covered in the past 1 week. But guys, before beginning this session, there is a very small announcement for all of you that we at EduTap are providing a comprehensive guidebook for the aspirants of RBI Grade B, NABARD Grade A as well as the SEBI Grade A exam. Okay, so guys, when I talk about these guidebooks now, these guidebooks provide definitive answers to queries which basically pops up in the mind of aspirants. अब आप सब सोच रहे होंगे कि वो क्या क्वेरीज हैं जो एक एस्पिरेंट के माइंड में आती हैं. सी गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट द क्वेरीज, इट कैन बी अबाउट द बॉडी इन विच यू आर टारगेटिंग टू एंटर. इट कैन बी अबाउट द एग्जाम. It can be about how to prepare for this exam. For example, when I talk about the Reserve Bank of India. So what exactly is the developmental role that the RBI plays in the Indian economy? So this kind of question can pop up in the student's mind. And when I talk about the exam, for example, what is the eligibility criteria? What are the basically different sections in the exam? What is the pattern of the exam? What is the previous year cutoffs? Apart from that, when I talk about the preparation, so what is exactly are the sources that you must require to cover in order to cover this particular syllabus as well as to crack this particular exam? And all the answers to these queries will be provided to you in these comprehensive guidebooks which are absolutely free. So what are you waiting for? Kindly download these guidebooks from the link given in the description of this particular video. So hi Sahil, I really believe that guys you all are preparing really well for upcoming exams. And now a very important announcement that today we are going to cover the top 50 MCQs, and all of you are required to tell me that what exactly your scores are at the end of the session. So guys, today I want to test you. I want to test your preparation with these top 50 MCQs, and this is a challenge to all of you, and let's see that who will get the best score out of 50 in this particular session. And the very first question from the today's session is here on your screen. So the question is, which of the following is a designated nodal bank for the Padho Pradesh Scheme? See guys, when I talk about the Padho Pradesh Scheme, the objective of this scheme was basically to provide the interest subsidy to the meritorious students. See guys, जो meritorious students हैं हमारे, जो belong करते हैं minority communities से, ठीक है, उन students को यहाँ पर हम interest subsidy provide कर सकते हैं जिससे वो basically higher education में अपने admission ले सकते हैं in abroad, that is outside India. It can be for the masters, it can be for MPhil, it can be for the PhD. और इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए एक नोडल बैंक को डेजिग्नेट किया गया है, और आपको बताना है कि ये जो नोडल बैंक है इसमें से कौन सा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डेजिग्नेटेड एज द नोडल बैंक फॉर पढ़ो प्रदेश स्कीम. और यहां पर मैं आपको बताऊं कि आखिर क्यों ये स्कीम न्यूज के अंदर है. द स्कीम वाज इन न्यूज बिकॉज इट हैज बीन रिसेंटली डिसकंटिन्यूड. So guys, when I talk about the right answer to this question, the right answer is option D, that is Canara Bank. And here you can see that Ministry of Minority Affairs ने इसको discontinue किया है, and this scheme basically was to provide interest subsidy on education loans for the overseas studies for students belonging to minority communities, and इसका Canara Bank was the designated nodal bank for the implementation of the scheme. So guys, please see, as I can see here that lot of people are answering this question. Guys, see, let me tell you that answering the question in this session is really very important because your participation is going to make this session more fruitful. So I am getting here that all the people have given the right answer, that is option D. Now let us move on to the next question of the today's session. So here guys, the next question is from a report, and whenever we talk about the report,
की फाइंडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है एक रिपोर्ट की, और उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। एज पर द रिपोर्ट कंडक्टेड बाय द डील रूम एंड लंडन पार्टनर्स, इंडिया हैज रैंक्ड डैश ग्लोबली फॉर द टेक वीसी इन्वेस्टमेंट्स इन 2022। सी गाइस, टेक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की यहां पर बात हो रही है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि बेसिकली इंडिया की जो रैंक है वो क्या है ग्लोबली फॉर द टेक वीसी इन्वेस्टमेंट्स इन 2022। लेट मी टेल यू अबाउट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट that when I talk about in India the tech venture capital investment was 24.1 billion US dollars, ठीक है जी, in year 2022. And when I talk about the top 3 countries, it were US, followed by China, followed by United Kingdom. And now I think that it will be easier for you to answer the question. The right answer to this question is option B, that is fourth. Basically, India was in the top 4 countries. India was for the fourth company. India was the fourth country globally which has got the highest tech VC investments in year 2022. Absolutely right, Sahil, you have given the right answer. That is option B, fourth. Now moving on to the next question. As with the report titled Transforming Education with Equitable Financing, Poorest Learners Benefit the Least from National Public Education Funding. See guys, जब भी हम किसी रिपोर्ट की बात करते हैं, वी ऑलवेज टेल यू दैट देयर आर टोटल 5 डायमेंशंस जिसके ऊपर एक रिपोर्ट को आपको कवर करना जरूरी है. इट कैन बी द वेरी फर्स्ट डायमेंशन इज द रिलीजिंग बॉडी, द सेकंड डायमेंशन इज अबाउट दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, थर्ड डायमेंशन इज द रैंकिंग, फोर्थ इज बेसिकली द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड फिफ्थ वन इज बेसिकली द रिकमेंडेशंस. और यहां पर अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की, तो इस क्वेश्चन के अंदर पहली बेसिक डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज द रिलीजिंग बॉडी. किसने इसको रिलीज किया है, दैट इज what the question is all about. So let me give you a small hint that this particular organization जिसने इसको रिलीज किया है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर. ठीक है जी, तो न्यूयॉर्क के अंदर उसका हेडक्वार्टर है. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लीज टेल मी द कमेंट सेक्शन. Absolutely right guys, it is option D, that is UNICEF. UNICEF is the right answer to this particular question. और यहाँ पर कुछ important findings हैं जो आपको याद करना बेहद जरूरी है. That is, सिर्फ as per this report एक काफी ड्रास्टिक यहां पर फाइंडिंग इन्होंने लॉन्च की है, दैट इट सेज दैट 16% ऑफ द पब्लिक एजुकेशन फंडिंग गोज टू द पूरेस्ट 20% ऑफ द लर्नर्स, जबकि इसमें से 28% की जो फंडिंग है वो जाती है रिचेस्ट 20% लोगों को. दैट इज बेसिकली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस रिपोर्ट ऑल्सो सजेस्ट दैट अगर सिर्फ 1% का इंक्रीज किया जाए, ये जो हम एलोकेशन देते हैं पब्लिक एजुकेशन रिसोर्सेज के लिए, जो भी चीजें अलॉट करते हैं, तो उसमें 1% का इंक्रीज किया जाए, तो बेसिकली इट इज गोइंग टू लिफ्ट 35 मिलियन प्राइमरी स्कूल एज children from the learning poverty. Okay, so guys, यहाँ पर एक चीज और important है आप सभी के लिए, and that is basically whenever you find such kind of institutions in the news, so what you are required to cover, you are really required to remember कि उसके बारे में आपको खुद से कुछ सवाल करने हैं. that is, उसका हेडक्वार्टर क्या है, उसके चीफ कौन है. जैसे कि मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के आते ही कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको रिलीज किया है इस रिपोर्ट को, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क. और अगर हम बात करते हैं उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, so she is basically Catherine Russell is presently serving as the executive director of UNICEF. So guys, I hope that this is very much clear to all of you. Let's move on to the next question. And अगला question आपकी screen पर, and you are required to tell me the name of the Indian city which has topped the startup funding chart in India with the USD 10.8 billion in 2022. See guys, let me tell you here that such kind of questions are very very direct in nature, and that is why I'm just going to tell you the right answer, and I will be moving towards the next question because these questions do not require much of the discussion. Now let me tell you the right answer. Right answer is option C, that is Bengaluru, and that is the right answer. As you can see, Bengaluru ने टॉप किया है स्टार्टअप फंडिंग चार्ट के अंदर इंडिया के अंदर. ओके, सो दैट इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, which of the following has become the first public sector bank to launch credit card against the फिक्स डिपॉजिट्स डिजिटली. तो यहां पर आपको मुझे बताना है कि वो कौन सा बैंक है. सो गाइस, लेट मी टेल यू वंस अगेन, गिव यू वन मोर हिंट अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट the presently the MD and CEO of that particular bank is basically Atul Kumar Goyal ji. ठीक है, now I think life is easier for you to answer this question. So guys, absolutely the right answer is option A, that is Punjab National Bank. So option A, Punjab National Bank is the right answer. So guys, please, all of you are requested to answer the question. See, whatever you think the right answer is, whether it is right and wrong, it doesn't matter. The main thing is that you are really required to answer the question in this particular session. क्योंकि जब आप आंसर करेंगे, if you are committing any kind of mistake now,
then also it is really good, because when in the exam such kind of question will come, so what is basically going to help you is you will just remember कि यार उस सेशन के अंदर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, बट आज के इस एग्जाम में मैं इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करने वाला हूं, ठीक है. एंड दैट्स हाउ यू आर रियली गोइंग टू रिमेंबर द राइट आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So as per the EY report, has projected Indian economy to be USD 26 trillion by which year? So basically in this question you are required to tell me the year by which, as per the EY report, it has projected Indian economy to reach USD 26 trillion. So guys, when I talk about the right answer, it is option B, that is 2047. और इसको काफी इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि EY ने कहा है कि India is going to celebrate its 100th year of independence with the USD 26 trillion economy, and that is what the right answer is. Now the next question. CMAI and Areas, which stands for Association of Renewable Energy Agencies, have signed an MOU. And see guys, we always tell you that whenever there is an MOU, you are really required to remember about two important things. The first one is that what is exactly the aim of the MOU, and the second is the parties between which that particular MOU has been signed. तो अगर हम बात करते हैं कि parties की, तो parties तो यहाँ पर दोनों दी गई हैं, that is CMAI and REAS. And now the second important thing is that what is exactly the aim. Aim is to exchange knowledge and regulatory developments in द डैश मार्केट. तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर मार्केट की बात हो रही है जिसको ये टारगेट करने वाला है. एंड एब्सोल्युटली राइट साहिल, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज कार्बन मार्केट. ठीक है जी, तो कार्बन मार्केट इज द राइट आंसर, एंड CMAI बेसिकली स्टैंड्स फॉर कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया. दैट इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. So guys, recently National Startup Day पे National Startup Awards 2022 के winners को felicitate किया गया था. And what the question is all about, you are required to tell me that on which day in India we celebrate the National Startup Day. And guys, let me tell you that last year Prime Minister Narendra Modi ji has announced that in order to promote businesses and to promote entrepreneurship in India, India is going to celebrate the National Startup Day on this particular day, and that particular date is basically 16th of January. तो 16th of January को हम हर साल अब बनाते हैं National Startup Day. That is what the right answer is. And see guys, these important days are also really very important from the exam point of view, and that is why it is really required to be covered from the exam point of view. Now the next question. The next question is here on the screen, and the question is, you are required to tell me the name of the state. वो state जिसको recently award दिया गया है, bronze award दिया गया है in the United Nations Human Settlement Program World Habitat Awards 2023 for the Jaga Mission. तो Jaga Mission के लिए इसमें से कौन सी state को यहाँ पर bronze award से सम्मानित किया गया है for the UN Habitat World Habitat Awards 2023? And here guys, the name of that particular state is option C, that is Odisha. तो यहां पर अगर हम बात करते हैं जगह मिशन की, दैट इज उड़ीसा लाइवेबल हैबिटेट मिशन, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड टिटलिंग एंड स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम. ठीक है जी, सो दैट इज व्हाट द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिसेंटली कंफर्म किया है इंगर एंडरसन को फॉर द सेकंड टर्म एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ which of the following organs of the United Nations? See guys, let me tell you here that as I already told you कि ये जो important announcements हैं, see important appointments हैं, they are really very important from the exam point of view. और ऐसे ही किसी बड़ी organization का, या फिर इंडिया के किसी बैंक के, या फिर किसी regulatory body के, या फिर किसी important institution के, अगर यहाँ पर चेयरमैन को या फिर जो MD and CEO हैं, अगर उनमें कोई भी recent appointment changes होते हैं तो वो एग्जाम के लिए कवर करना बेहद जरूरी है. इसी तरीके से अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जिसके सेकंड टर्म एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन को चूज किया गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द राइट आंसर. सो गाइस, लेट मी गिव यू अ स्मॉल हिंट अबाउट दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन नायरोबी, Kenya, and when I talk about the right answer to this question guys, it is option D, that is United Nations Environment Program. That is the right answer. Now let's move on to the next question. So 18th National Disaster Response Force Raising Day, यहाँ पर ये कौन से डेट को बनाया जाता है? That is what the question is. A very direct question and halwa question for all of you. And guys, the right answer to this is option C, that is 19th of January. That is the right answer. So guys, 19th January is the right answer to this question. Now let's move on to the next question. So यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी कंट्री के आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने
रिसेंटली फाउंड किया है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रन स्टोन? तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है, सी गाइस, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोन एंड दीज इंस्क्रिप्शंस आर ओवर 2000 years old. So guys, when I talk about the right answer, that particular name of the country जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर्टिकुलर रनस्टोन को फाइंड आउट किया है, let me give you a small hint once again that the capital of that particular country is Oslo. Now I think that the life is easier for you to answer this question, and absolutely it is option A, that is Norway. So Norway is the right answer, guys. Let's move on to the next question. So which of the following is the name of the inaugural Indo-Egypt joint special force training exercise which was held recently in Rajasthan? See guys, let me tell you that this is the very first time that this particular kind of exercise has been held between Indian and Egyptian armies, and that is why I'm marking the star here, because such kind of question is really very important from the exam point of view, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है, and that is why such kind of questions are really very important. And now when I talk about the right answer is option B, that is Cyclone 1. So guys, Cyclone 1 is the right answer to this question. Let me tell you, the right answer is option B, that is Cyclone 1. Absolutely right. Now let us move on to the next question. So अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, and you are required to tell me the name of the bank which has backed the Inclusive Finance India Award 2022 for its contribution in advancing the goal of financial inclusion, supporting inclusive growth. So guys, this is basically the right answer is. So please tell me what is the right answer to the question number 14. The name of the bank which has backed Inclusive Finance India Award 2022 for its contributions, and absolutely the right answer is option D, that is ESAF Bank. So guys, these Inclusive Finance India Awards was basically an initiative of Access Development Services constituted in 2009 in partnership with HSBC India. So guys, I hope that this is clear to all of you. Now let's move on to the next question. So here the question number 15 is on the screen, and here you can see that recently a joint venture of Dash and Tata Advanced Systems Limited has delivered the first fuselage for the 6 AS-64 Apache attack helicopters ordered by the Indian Army. तो आपको मुझे यहाँ पर बताना है कि क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर. You are just required to fill in that particular blank. Let me tell you that particular name which is going to fill this particular blank is basically an American organization, and now I think that it is very easier for you to answer this question. Absolutely right, it is option B, that is Boeing. और यहाँ पर साहिल और प्रकाश इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज बोइंग. एंड गाइस, लेट मी टेल यू आल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट टाटा ग्रुप को रिसेंटली मिला है सप्लायर ऑफ ईयर अवार्ड फ्रॉम the Boeing company for the year 2022. Okay, so that is also the very important information that you must remember from the exam point of view. Let's move on to the next question. So export obligations ने recently relax किया है for the hotel हेल्थ एजुकेशन सेक्टर अंडर द EPCG स्कीम. और गैस, जब भी ऐसी कोई स्कीम आती है विच इज हैविंग एन एक्रोनिम, तो यहां पर आपको बेशक हमेशा याद रखना होगा कि क्या बेसिकली उस एक्रोनिम का फुल फॉर्म है. ठीक है जी. एंड इसी तरीके से अगर मैं बात करूं EPCG स्कीम की, EPCG पे यहां पर क्वेश्चन ये है दैट व्हाट एग्जैक्टली C स्टैंड्स फॉर इन द EPCG स्कीम. सी गाइस, देयर आर लॉट ऑफ मेनी स्कीम्स एज वेल which are having such a kind of acronyms. For example, we have Aspire scheme, we have Smile scheme, we have PM कुसुम. सो सच काइंड ऑफ स्कीम्स जो भी रिलीज की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, उसके यहाँ पर आपको फुल फॉर्म याद करना बेहद जरूरी है. एंड हियर गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर, इट इज ऑप्शन डी, दैट इज कैपिटल. और यहाँ पर EPCG स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, which is a trade promotion scheme, और इसको implement करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, which allows duty free import of capital goods for the purpose of export production in India. That is what the right answer is. Let's move on to the next question. So guys, question number 17 is here on the screen, and the question is, American Indian Foundation has inaugurated India's first STEM. See guys, STEM here stands for science, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है अंडर द स्कीम ऑफ वनाविल मंदरम. और आपको बताना है कि ये कौन सी लोकेशन है जहां पर इस पर्टिकुलर इंडिया के पहले स्टेम इनोवेशन और लर्निंग सेंटर को लॉन्च किया गया है. सी गाइस, व्हाई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हियर यू कैन सी इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड इंडियाज फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर. और आप यहां पर देख सकते हो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज चेन्नई. एब्सोल्युटली राइट साहिल, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज चेन्नई. तो चेन्नई के अंदर इंडिया का पहला फर्स्ट टाइम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर को लॉन्च किया गया है. एंड दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द स्टेम रिलेटेड इश्यूज अमंग द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
एज पर द रिसेंट न्यूज इंडिया फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन, तो यहाँ पर इंडिया का पहला 5G एनेबल्ड ड्रोन को लॉन्च किया गया है। कंपनी का नाम है IG ड्रोन्स, और आपको बताना है कि उस ड्रोन का नाम जिसका जो कि इंडिया का पहला 5G एनेबल्ड ड्रोन है। सी गाइस, व्हाई सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट? वंस अगेन यू कैन सी दैट इट इज इंडिया फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन, और इंडिया का पहला 5G एनेबल्ड ड्रोन जिसको लॉन्च किया गया है उसको बनाया किसने, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज IG ड्रोन्स। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर गाइस, इट इज ऑप्शन डी, दैट इज Skyhawk. Skyhawk is basically the right answer to this particular question. ठीक है जी, I hope this is clear guys, absolutely right. And when I talk about the Skyhawk guys, it can be used in defense and medical application. That is what the right answer. And here Bhubesh Durai Sahil have answered the question correctly. That is option D, Skyhawk. Now let's move on to the next question. As per WHO, currently more than dash children in the 15 worst affected countries suffered from wasting or acute malnutrition. तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि as per this particular report, more than dash children in the 15 worst affected countries suffer from wasting or acute malnutrition. See guys, this is basically not a kind of report. This is one such kind of study which has been presented by the WHO. और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे बताना है कि क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर। And here I can see that Chiranjeev Jha is saying that the right answer is option D, that is 30 million, and that is absolutely the right answer. The right answer is 30 million. So guys, here you can see that as per the WHO, currently more than 30 million children in the 15 worst affected countries suffer from or acute malnutrition, and 8 million of these children are severely wasted. So guys, that is basically the right answer. And here one of the persons, Sanjeev, is saying, Chiranjeev is saying that this question was in SEBI today. So guys, I really believe अगर SEBI के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो आपने डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी अपने फास्ट ट्रैक सेशंस में कवर किया इस इंफॉर्मेशन को। और आप अगर हमारे फास्ट ट्रैक सेशंस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में बेस हमेशा सक्सेसफुली आंसर कर पाएंगे। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इंडियंस remitted nearly $2 billion under the LRS scheme, that is liberalized remittance scheme, which is being launched by the Reserve Bank of India. ठीक है जी, और इस स्कीम के अंतर्गत मुझे आपको बताना है that LRS scheme allows all residents including the minors to freely remit what amount each fiscal year. तो कितने अमाउंट तक की लिमिट है जो कि सभी रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग माइनर्स दे कैन बेसिकली remit per financial year. So guys, please tell me what is the right answer to the question number 12. See guys, when I talk about the liberalized remittance scheme, it was basically launched by the Reserve Bank of India in year 2004. और earlier अगर मैं बात करूं तो initially that limit was basically $25,000. ठीक है जी, but now this particular limit has been increased, and here guys, the right answer to this question is option A, that is $250,000. So $215,000 is the right answer. Bhubesh has given the right answer to this particular question. I hope that this is clear to all of you guys. So यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर पिछली जो हमारी पिछली नवंबर 2022 के अंदर जो हमारी वैल्यू थी और नवंबर 2021 से अगर हम उसे कंपेयर करें तो देयर वाज अ इंक्रीमेंट ऑफ 29% इन द रेमिटेंसेस। एंड जब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कहां पर हुआ है, तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर वाज बेसिकली ऑन द इंटरनेशनल ट्रेवल्स, ओके, एंड इट वाज फॉलोड बाय, so guys, it was followed by the maintenance of close relatives, it was followed by gifts, and it was followed by the overseas education. So that is what the right answer to this particular question. And here I can see that one of the student Sejal is saying that, sir, please tell how to contact you, we have multiple queries. So यहाँ पर Sejal, what you can do is you can just place a call, you can what you can do, you can just share your query on hello@edutap.co.in, ठीक है जी, और वहां से आप अपनी कॉल अरेंज करा सकते हैं, ठीक है। So do not worry, at the end of the session what you can do, you can just share your query on the mail and there you can arrange a call, okay. So do not worry about it, all your queries will be resolved, okay. So now presently you are required to focus on the today's session, and here the 21st question of the today's session is here on the screen. According to the January edition of the Reserve Bank of India's monthly bulletin, the Reserve Bank of India is aiming to bring inflation towards the medium term target of -% by 2024. So guys, quickly tell me what is the right answer to the question number 21. As per the RBI monthly bulletin,
the Reserve Bank of India is aiming to bring inflation towards the medium target of dash percent by 2024. See guys, when I talk about the inflation, it is a general rise in the prices, and when I talk about the right answer, it is option D, that is 4%. So 4% is the right answer. Let's move on to the next question. So यहाँ पर आपको मुझे बताना है उस कंपनी का नाम जिसको सेलेक्ट किया है एज द स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू द एयरबस. तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है टू द एयरबस, एंड गाइस एब्सोल्युटली राइट, इट इज option B, that is L&T Technology Services. That is the right answer to this particular question. I hope guys that this is very much clear to all of you to the question number 22. And now let's move on to the question number 23. So यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि that Hockey World Cup is presently going on in राउरकेला, उड़ीसा. ठीक है जी, और जहां पर यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी बनाया गया है और वहां पर हॉकी वर्ल्ड कप को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है. और यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपके एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप से. द क्वेश्चन इज, एफआईएच ने रिसेंटली पार्टनर किया है इसमें से कौन से एंटिटी के साथ फॉर द हॉकी डेवलपमेंट एंड मेंस वर्ल्ड कप? एंड एब्सोल्युटली राइट, आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स फ्रॉम द पीपल हियर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23. एब्सोल्युटली इट इज ऑप्शन ए, दैट इज जेएसपी फाउंडेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टारगेट्स टू बी द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2025? वो कौन सा स्टेट है जो कि इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने वाला है, जो टारगेट कर रहा है ऐसा बनना बाय ईयर 2025? तो यहां पर गाइस मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट डायमेंशंस क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्टेट का नाम इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ईयर बाय विच इट इज टारगेटिंग टू बिकम the first, it is targeting to achieve that particular target. And absolutely right guys, it is option C, that is Himachal Pradesh. और अब आप सभी के सामने क्वेश्चन ये है कि असम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे और आपको मुझे बताना है कि क्या है हिमाचल प्रदेश के नए सीएम का नाम इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है जी, तो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए कि क्या है हिमाचल प्रदेश के नए सीएम का नाम, और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज हियर ऑन योर स्क्रीन. So here guys, the next question is on the screen. So Jananpith winning poet Nilmani Phukan has passed away recently. See guys, these important personalities from the recent obituaries are really very important क्योंकि इनके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं in the previous years as well. And now यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि उन्होंने जो पोएम्स लिखी थी वो कौन से लैंग्वेजेस में वो पोएम्स लिखते थे. नाम है उनका नीलमणि फूकन, who has passed away recently. And let me give you a very brief introduction that this particular person basically received the Jananpith Award, basically which is highest literary award in India, and he was awarded with that award in year 2022. And absolutely right guys, to the question number 25, the right answer is option C, that is Assamese. And Bhubesh ने दिया इस क्वेश्चन का सही आंसर, और सूरज निम्बाड़े ने दिया absolutely सुखविंदर सिंह सुक्खू is right, presently the CM of Himachal Pradesh. Now let's move on to the next question. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, and here you are required to once again fill in the blank. So Dash Literature Festival 2023 has begun, and this particular festival guys described as the greatest literary show on earth, and that is why this is required to be covered. That is why it is in the news. और आपको मुझे बताना है कि ये जो लिटरेचर फेस्टिवल 2023 है ये इसमें से कौन सी जगह पर रिसेंटली स्टार्ट हुआ है. That is what the question is, and absolutely right guys, the right answer to this particular question is option E, that is Jaipur. So guys, Jaipur is the right answer to this particular question. Now let's move on to the next question. So यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी डिफेंस फोर्सेस हैं इंडिया के जिन्होंने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है इन द बायएनुअल एम्फीबियस एक्सरसाइज एमफेक्स 2023. सी गाइस, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके लिए ये है कि बेसिकली जब भी ऐसी कोई एक्सरसाइज होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्टिसिपेंट्स कौन थे उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि उस एक्सरसाइज का वेन्यू क्या है, कहां पर उसको होस्ट किया गया है, कहां पर वो एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी. ठीक है, सो हियर रितु इज सेइंग दैट सर केवीएस पीजीटी के लिए ये रेलेवेंट है क्या? सी गाइस, लेट मी टेल यू दैट जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसमें अगर करंट अफेयर्स आता है, अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है तो वहां पर मैं आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके सामने यहीं से आते हैं, और दैट इज व्हाई सच काइंड ऑफ करंट अफेयर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स. ठीक है जी, और यहां पर हम बढ़ते हैं अपने राइट आंसर की तरफ इस क्वेश्चन के. द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑल ए बी एंड सी, दैट इज इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज all the Indian Defense Forces, that is Indian Navy, Army and Indian Air Force basically participate in that. और यहाँ पर साहिल ने दिया है बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर, that this particular exercise was held in near Kakinada in Andhra Pradesh, and that is what the right answer to this particular question. Now let's move on to the next question.
सो अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 समिट. तो रिसेंटली ये समिट हुई थी डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर, और क्वेश्चन ये है कि इस समिट की थीम क्या थी. सी गाइस, जब भी ऐसी इंपॉर्टेंट समिट्स होती हैं तो उसकी थीम क्या है, उसको होस्ट किसने किया है, काफी इंपॉर्टेंट होती है. तो डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर ये पर्टिकुलर समिट हुई थी, और मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के 2019 के मेंस एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट थी ये कहां पर हुई थी, एंड द राइट आंसर वाज डेवोस स्विट्जरलैंड. और यहां पर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि थीम क्या है इस पर्टिकुलर समिट की, एंड एब्सोल्युटली राइट गाइस, इट इज ऑप्शन ए, दैट इज कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड. दैट इज द राइट आंसर. एंड वंस अगेन भूपेश दुरई, साहिल पवार हैज गिवन द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, और सूरज निम्बाजे ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर किया है. दैट इज ऑप्शन ए, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो रिसेंटली गाइस, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट, और आपको बताना है कि वो कौन सा पर्सन है जिसको रिसेंटली डीजीसीए के अगले डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है. What exactly is the name of that person who has been recently appointed as the next Director General of the Directorate General of Civil Aviation? And absolutely I'm getting the right answers. Absolutely the right answer is option A, विक्रम देवदत्त. और मैं आपको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि एग्जाम के अंदर जो न्यू अपॉइंटी है उसके बारे में तो आ ही सकता है, और साथ में जिस पर्सन को रिप्लेस किया है उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन को याद रखना बेहद जरूरी है. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, विक्रम देवदत्त ने यहाँ पर सक्सीड किया है अरुण कुमार जी को, who was basically earlier serving as the DGCA Director General. Okay, and now the next DGCA Director General is basically Vikram Devdutt. Absolutely right. Now the next question. So which of the following will acquire 100% stake in the Khargon transmission? तो यहाँ पर काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज इंडिग्रिड. काफी इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है आप सभी के लिए. अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि रिसेंटली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कंडक्ट करता है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट फील्ड सर्वे, उसने कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है टू कंडक्ट दिस पर्टिकुलर सर्वे. सो यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी गाइस दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्ड एन एमओयू विद द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया टू कंडक्ट ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट फील्ड सर्वे, एंड एब्सोल्युटली इट इज ऑप्शन बी, दैट इज B for Bihar. So B for Bihar is the right answer to this question. Absolutely right. All of you have given the right answer to this question. Now let's move on to the next question. Thailand's Kunlavut Vititsarn has won the Indian Open Badminton title 2023. और आपके सामने क्वेश्चन ये है, सी जब भी कोई ऐसी चैंपियनशिप जीता है तो यहाँ पर सिर्फ विनर का नाम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने जिसको डिफीट किया है उसका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड दैट इज वाई वेन एवर यू आर कवरिंग सच काइंड ऑफ न्यूज आर्टिकल्स, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी ऐसा कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं तो जिसने जीता है वो तो इंपॉर्टेंट है, और जिसको हराया है उसका नाम भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द नेम ऑफ द प्लेयर हु वाज डिफीटेड by this Thailand person is the right answer, and absolutely it is option D, that is Victor Axelsen is the right answer to this question. और अगर हम बात करते हैं women's की, तो women title की अगर हम बात करें, it was basically won by Korean An Seong, who has basically won the women's singles final, and she basically defeated the world's number 1 Japanese Akane Yamaguchi, and that is what the right answer is. Now let's move on to the next question. So अगला question guys, once again a very easy question for all of you. The question is on the Parakram Divas 2023. See guys, let me tell you that Parakram Divas is basically celebrated in India to mark the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose ji, and यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि on which day basically we celebrate, we observe the Parakram Divas, and absolutely all of you have given the right answer, that is option D, 23rd of January. 23rd January को in India we celebrate the Parakram Divas. Okay, now I hope that this is clear guys. Let's move on to the next question. अगला question आपकी स्क्रीन पर, and the question is Millets and Organics 2023 International Trade Fair has kicked off which of the following places. तो Millets and Organics 2023 एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, और ये रिसेंटली इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ है. और ऐसा कोई भी ट्रेड फेयर और इंपॉर्टेंट इवेंट, जैसे कि मैंने बात की लिटरेचर फेस्टिवल की जो कि स्टार्ट हुआ था जयपुर राजस्थान के अंदर, सिमिलरली एक ऐसा ही इवेंट है दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स 2023, और आपको बताना है कि ये इसमें से कौन सी प्लेस में स्टार्ट हुआ है. द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द वेन्यू एंड टेल मी द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन. एंड एब्सोल्युटली राइट गाइस, द राइट आंसर इज बेंगलुरु. सो बेंगलुरु इज द राइट आंसर, एंड एवरीबॉडी ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी टू सी दैट ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन गाइस. एंड लेट मी टेल यू, लेट मी रिमाइंड यू कि सेशन के बाद आप सभी को अपने स्कोर्स भी मुझे बताने होंगे आउट ऑफ 50 इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है जी, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन. सो HCHF
एंड डैश टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड एन एनुअल एथनिक ममानी फेस्टिवल। तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि कौन सी प्लेस के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया है along with HCSF, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लद्दाख। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन ने लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द बैंक व्हिच हैज डोनेटेड 5 करोड़ टू उत्तराखंड सीएम फॉर केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट। और यहाँ पर गाइस आपको मुझे बताना है उस बैंक का नाम जिसने कि डोनेट किए हैं 5 करोड़ रुपीस टू दैट पर्टिकुलर ट्रस्ट। एब्सोल्युटली इट इज HDFC Bank। See guys, these are very direct in nature and that is why I'm just moving forward to the next question because they do not require any kind of further discussion here. Okay, now let's move on to the next question। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, which of the following states and UTs has launched the 100 days to beat plastic campaign। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा कोई प्लास्टिक कैंपेन, जब भी ऐसा कोई मेजर कैंपेन और जिसके अंदर कुछ टारगेट नंबर ऑफ डेज हैं, ये आपके सामने आता है एग्जाम के अंदर, और दैट इज व्हाई इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने डेज का कैंपेन है, और ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिकली कौन सी स्टेट और यूटी ने इसको लॉन्च किया है। एंड एब्सोल्युटली राइट गाइस, साहिल हैज गिवन मी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज दिल्ली। वेल डन साहिल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स हैज रूल्ड दैट द कल्टीवेशन ऑफ मैनग्रोव्स इन डिफरेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, एंड इसीलिए उसके ऊपर अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी आपको बताना है कि उसके ऊपर जीएसटी कितना लगने वाला है, व्हाट एग्जैक्टली इज द परसेंटेज ऑफ द जीएसटी व्हिच विल बी अट्रैक्टेड बाय दीज मैनग्रोव्स। एंड एब्सोल्युटली राइट गाइस, इट इज 18%, द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मिनिस्ट्री ने रिसेंटली साइन किया है MOU with which of the following entities to work together for the promotion of medical value travel। See guys, let me tell you once again, whenever we have MOU in the news, what is exactly important is the name of the parties। आयुष मिनिस्ट्री is one party, अगली पार्टी का नाम आपको बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। एंड what is the aim is also very important। The aim is basically the promotion of medical value travel in Ayurveda and other traditional systems of the medicine। And here when I talk about the right answer guys, absolutely the right answer is option C, that is ITDC। So ITDC is the right answer। Bhubesh has given the right answer to this question। Let's move on to the next question। So यहाँ पर आपको मुझे बताना है recently यहाँ पर इनको अपॉइंट, इनमें से किसी एक को अपॉइंट किया गया है, who is going to head the government appointed 5-member oversight committee। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस कमेटी की, तो वी ऑल नो दैट कुछ चार्जेस यहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट लगे हैं। तो उस चार्जेस को यहाँ पर स्टडी करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर एक कमेटी बिठाई गई है 5 मेंबर्स की, और आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सा पर्सन है जो कि उसको हेड करने वाला है। सी गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अपनी कॉमन सेंस अगर आप लगाएं तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। और पहला ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री का नाम, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का नाम दिया गया है, ठीक है। अगला ऑप्शन है PV सिंधु विच इज बेसिकली फ्रॉम द बैडमिंटन, तो वो भी यहाँ पर एलिमिनेट हो सकते हैं। देन ऑप्शन ई, MS धोनी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। एंड हियर गाइस द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज MC मैरीकॉम। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन हमारे सामने बचते हैं जो कि हो सकते हैं, एंड एब्सोल्युटली राइट, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज MC मैरीकॉम। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि इंडिया इज अमंग टॉप डैश नेशंस इन एक्सपेंडिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन 2020। तो यहाँ पर सभी नाबार्ड के स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज इंडियाज is among the top dash nations in expanding the organic farming in 2020, and absolutely the right answer is 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम टॉप की बात करें, अर्जेंटीना है एंड फॉलोड बाय उरुग्वे एट 5,89,000 हेक्टेयर्स विच इज 28%, और थर्ड नंबर पर आता है इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज मोबिलाइज्ड मोर देन डैश अमाउंट फॉर प्रोजेक्ट्स इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। वंस अगेन द क्वेश्चन फॉर द नाबार्ड स्टूडेंट्स एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, द राइट आंसर इज 30,000 करोड़। सी गाइस, दीज आर वेरी वेरी डायरेक्ट इन नेचर एंड दैट इज आई एम जस्ट टेलिंग यू द राइट आंसर। सो यहाँ पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड which is a financing facility जिसको जुलाई 2020 के अंदर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड बेसिकली इट वाज लॉन्च फॉर द क्रिएशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्म एसेट्स अक्रॉस इंडिया। एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ पर सूरज ने बिल्कुल सही बताया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड इंडिया आर बेसिकली द टॉप 3 कंट्रीज इन दैट। नाउ गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वंस अगेन यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द बैंक। वो बैंक जिसने की एक नई फैसिलिटी, एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम है स्वाइप अप। सी गाइस, जब भी रिसेंटली ऐसी कोई प्लेटफॉर्म या फिर नई फैसिलिटी यूज की जाती है तो उसके बारे में पढ़िए, और किस बैंक ने उसको लॉन्च किया है उसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी तरीके से एक नया
आई मोबाइल ऐप लॉन्च किया था आईसीआईसीआई बैंक ने, और उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था आरबीआई ग्रेड बी 2021 के प्रीलिम्स के अंदर, एंड दैट इज व्हाई सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज एग्जाम्स. नाउ मूविंग ऑन टू द राइट आंसर, इट इज AU Small Finance Bank. That is the right answer. So I hope guys this is very much clear to all of you. Let's move on to the next question. So अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और यहाँ पर this question is one of the loan agreement which has been signed between the ADB, that is Asian Development Bank, which is basically headquartered in Manila, Philippines. ठीक है जी. और अगर हम बात करते हैं उसके प्रेसिडेंट की, it is basically असत्सुगो असाकावा. ठीक है, मसत्सुगो असाकावा is the right answer. और यहाँ पर हम बात करें ADB और नावा शिवा फ्रीपोर्ट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है. आपको बताना है कि कितने मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन एग्रीमेंट है. उसके एम की बात करें, द एम ऑफ दैट पर्टिकुलर अग्रीमेंट इज टू अपग्रेड द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल लोकेटेड इन द नवी मुंबई महाराष्ट्र. एंड गाइस एब्सोल्युटली इट इज ऑप्शन बी, दैट इज 131 मिलियन यूएस डॉलर्स. काफी इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर कवरिंग ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस अक्रॉस ऑल द डायमेंशंस, बिकॉज दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज डैश. बेसिकली आपको बताना है इंडिया की इसमें से कौन सी वो एंटाइटी है विच हैज प्लान्ड टू रेज एटलीस्ट 30 बिलियन रुपीज थ्रू द सेल ऑफ बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 10 years. तो अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट की, इस एंटाइटी के प्लान की, तो guys the right answer is option A, that is Housing Development and Finance Corporation. That is what the right answer to this question is. Now the next question, अगला question is guys once again the Tata Motor ने recently tie up किया है इसमें से कौन से बैंक के साथ. सी guys आप देख सकते हो कि बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ही एमओयूज करते हैं, अग्रीमेंट साइन करते हैं, और ऐसे जितने भी अग्रीमेंट्स हैं, वेदर इट इज बेसिकली विद एनी काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इट कैन बी अबाउट द बैंक एश्योरेंस लाइक विद द इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर ऐसे सभी एमओयूज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर. और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो टाटा मोटर ने एक ऐसा ही एमओयू साइन किया है जहां पर वो फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस ऑफर करने वाले हैं, और आपको बताना है कि वो कौन सा बैंक है जिसके साथ ये एमओयू साइन हुआ है. एंड एब्सोल्युटली इट इज आईसीआईसीआई बैंक इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने पार्टनरशिप की है विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस कंपनीज टू प्रमोट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रेमवर्क. तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रेमवर्क को प्रमोट करने के लिए एमएसडीई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ने यहां पर पार्टनरशिप की है, और आपको मुझे बताना है दैट व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस particular question. Once again this is basically a news from the MOU, और यहां पर दूसरी पार्टी का नाम पूछा गया है, and the name of that party is option D, that is Bharat Dynamics Limited. That is the right answer to this particular question. I hope this is clear guys. Let's move on to the next question. तो ओप्पो इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉमन सर्विस सेंटर के साथ पार्टनरशिप की है, और आपको बताना है कि इस पार्टनरशिप के तहत वो कितने विमेंस को यहां पर ट्रेन करने वाले हैं इन द साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर वेलनेस इन द कंट्री. तो यहां पर ऐसा कोई भी बड़ा एमओयू साइन होता है, और आप देख सकते हो कि यहां पर दोनों एंटिटीज का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओप्पो इंडिया एंड मिडिस कॉमन सर्विस सेंटर, जिन्होंने एमओयू साइन किया है, और कितने नंबर ऑफ वुमेन को ये साइबर सिक्योरिटी और साइबर वेलनेस में यहां पर ट्रेन करने वाले हैं. दैट पर्टिकुलर नंबर इज also very important from the exam point of view, and here guys it is 10,000 is basically the number of women who will be trained in the cyber security and cyber wellness in the country. Now the next question guys, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार 2023 यहां पर रिसेंटली कॉन्फर किया गया था, और आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ कैटेगरीज के अंदर इस पर्टिकुलर पुरस्कार को यहां पर कॉन्फर किया गया है अपॉन 11 चिल्ड्रन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्फर करते हैं इन सभी चिल्ड्रंस को, एंड दीज इज आर बेसिकली बीइंग कॉन्फर टू चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 18 years ऑफ एज. और यहां पर आपको मुझे बताना है कि कितने नंबर ऑफ कैटेगरीज के अंदर इस पर्टिकुलर चिल्ड्रन को यहां पर अवार्ड दिया जाता है. एंड हियर गाइस इट इज ऑप्शन डी, दैट इज अ टोटल ऑफ 6 कैटेगरीज. तो आप देख सकते हो कि चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 18 years आर बीइंग कॉन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार. ओके, सो आई होप गाइस दिस इज द राइट आंसर, एंड एब्सोल्युटली राइट. ऑल ऑफ यू आर रियली वेरी मच क्लियर टू विद ऑल ऑफ यू. एंड नाउ गाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन व्हिच इज हियर ऑन द स्क्रीन. द क्वेश्चन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यहां पर इसमें से किस डेट को मनाया जाता है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. लेट मी गिव यू अ स्मॉल हिंट दैट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बेसिकली अनाउंस किया था कि हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट करेंगे, और नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक भी यहां पर मनाया जाता है फ्रॉम 24th Jan टू
30th जैन एवरी ईयर, ठीक है। तो 24 जैन टू 30th जैन को मनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं सिर्फ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की, दिस इज बीइंग सेलिब्रेटेड across India every year on 24th of January, and that is absolutely the right answer. So Suraj has given the right answer, that is option A, 24th of January. So guys, that was all from the today's session. I really believe that today's session was really fruitful to all of you, and now this is the time that you are required to tell me that what exactly was your score आउट ऑफ 50 इन द टुडे सेशन। तो अपने अपने स्कोर्स जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, और कोई क्वेरीज हैं तो वो आप हमें बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज दिस। एंड गाइज, इफ यू आर स्टिल न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द कोर्सेज एंड वीडियोस ऑफर्ड बाय अस, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। सी, अगर इस सेशन की आपको पीडीएफ चाहिए गाइज, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहां पर आपको हमारे सभी सेशंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। सो गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम द टुडे सेशन, एंड नाउ इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, you can just drop us your mail at hello@edutap.co.in, and you can also call us at 8146207241। और guys, एक और अपडेट है। द अपडेट इज दैट अब से हर सैटरडे को हम 1 बजे ही इस सेशन के लिए मिला करेंगे। अर्लियर द टाइम वाज ऑफ 11 AM, बट नाउ वी विल बी मीटिंग at 1 PM on every Saturday, ठीक है। So I hope that this is clear to all of you. अगर आपको सेशन पसंद आया, if you have liked the session, then do not forget to share it with your friends, and you can also comment what you feel about this particular session in the comment section. So I really believe, as there are no more queries in the comment section guys, so we can conclude this particular session. So guys, thank you for joining us. Wish you all happy learning.